गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है न्यू आर्मी डिवीज़न। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लान किया है कि एक न्यू आर्मी डिवीज़न जो है ईस्टर्न लद्दाख में डिप्लॉय किया जाएगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इसके लिए प्लान जो है वो बहुत पहले से बना रही थी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख एरिया में कुछ चेंजेस करने के लिए। तो ये इस टाइम पर किया जाएगा जब हम 40th ईयर ऑफ ऑपरेशन मेघदूत जो है वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो ये न्यू आर्मी डिवीज़न जो है इसको क्रिएट किया जाएगा 72 डिवीज़न नाम से, और ये ईस्टर्न लद्दाख में इसको डिप्लॉय किया जाएगा। तो एक डिवीज़न में लगभग 14,000 से 15,000 ट्रूप्स होते हैं। कब अभी हमारे आर्मी में 4 स्ट्राइक कॉप्स हैं। मथुरा बेस्ड 1 कॉप्स, अम्बाला बेस्ड 2 कॉप्स, भोपाल बेस्ड 21 कॉप्स और 17 एमएससी पनागढ़। तो अभी 2021 तक सिर्फ 17 एमएससी जो थे वो ही चाइना पर फोकस करते थे। लेकिन जब मिलिट्री स्टैंड ऑफ चाइना के साथ हुआ 2020 में जो शुरू हुआ, तो 1 कॉप्स और 17 कॉप्स को भी रीस्ट्रक्चर करके नॉर्दर्न और ईस्टर्न बॉर्डर्स जो है वो चाइना के साथ लगा दिया गया है। तो जो 1 कॉप्स है वो नॉर्दर्न बॉर्डर्स विद चाइना को देख रहा है, 17 कॉप्स जो है वो ईस्टर्न थिएटर को देख रहा है। तो जो ये जो आपका 72 डिवीज़न जो लगाने की बात की जा रही है, ये एक रीडिप्लॉयमेंट चेंजेस करने का प्लान है ये। और इंडिया और चाइना का जो है ये 50,000 60,000 ट्रूप्स का जो ये स्टैंड ऑफ चल रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, गलवान वैली के इंसिडेंट के बाद से ही चल रहा है। तो गलवान वैली हो गया, पैंगोंग सो हो गया, गोगरा हॉट स्प्रिंग्स एरिया हो गया, यहाँ पर तो जो है कुछ फिर भी रेजोल्यूशन आया है पिछले 3 सालों में बफर जोन्स बनाने का। लेकिन देपसांग प्लेन्स और देमचोक जो रीजन है वहाँ पर कोई भी अभी तक डिसएंगेजमेंट नहीं हुई है। अब अगर हम ऑपरेशन मेघदूत देखें तो ये एक मिलिट्री ऑपरेशन था जब इंडियन गवर्नमेंट ने या इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने एक्चुअली 13 अप्रैल 1984 को कंट्रोल लिया था सियाचिन ग्लेशियर का, जो कि ईस्टर्न काराकोरम रेंज में आता है हिमालयाज़ की। तो ये ऑपरेशन में इंडियन ट्रूप्स जो हैं एयरलिफ्ट करके जो है ग्लेशियर के पास पहुंचाए गए, और उन्होंने जो है मिलिट्री पोस्ट बना ली वहाँ पर जाकर, और पाकिस्तान को तब से वहाँ पर आने नहीं दिया गया है। तो इंडिया जो है वो वहाँ पर अभी तक सियाचिन ग्लेशियर पर मिलिट्री प्रेजेंस रखता है, क्योंकि ये इंडिया का एक बोल्ड रिस्पांस था जो कि पाकिस्तान की एग्रेशन जो ताकि लद्दाख में ना हो सके उसको जो है रोकने के लिए एक डिफेंसिव ऑफेंस था ये। तो सियाचिन ग्लेशियर क्या है, जो कि ईस्टर्न काराकोरम रेंज में हिमालयाज़ में लोकेटेड है, नॉर्थ ईस्ट में पॉइंट ऑफ NJ9842 के नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है। जो लाइन ऑफ कंट्रोल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आती है, जहाँ पर एंड होती है। तो जो ये ग्लेशियर है ये साल्टोरो रेंज के बीच में लाई करता है इमिडिएटली टू द वेस्ट, और मेन कराकोरम रेंज टू द ईस्ट इसके पड़ती है। और ये पूरा जो सियाचिन ग्लेशियर है ये करंटली जो है सिंस 1984 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर इंडियन आर्म फोर्सेस के कंट्रोल में है। ग्लेशियर जो है उसके मेल्टिंग वाटर जो है वो नुब्रा रिवर का एक मेन सोर्स है, जो कि लद्दाख रीजन में आती है, और जो कि जो ये नुब्रा जो है शोक रिवर में जाकर ड्रेन होती है, ठीक है। और जो सियाचिन ग्लेशियर है वो लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है कराकोरम का, सेकंड लॉन्गेस्ट है वर्ल्ड का इन नॉन पोलर एरियाज। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडिया मॉरिशियस DTAA। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि अमेंडेड इंडिया मॉरिशियस प्रोटोकॉल जो DTAA डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट पर था, साइन हुआ है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, वो अभी तक वो रेटिफाई या नोटिफाई नहीं किया गया है डिपार्टमेंट द्वारा। तो DTAA जो है इंडिया और मॉरिशस के बीच में 1983 में साइन किया गया, यूनानिमस डिसीजन था ताकि डबल टैक्सेशन को अवॉइड किया जा सके। तो ये डबल टैक्सेशन क्या होता है कि मतलब एक अगर एम्प्लॉय समझ लो इंडियन अगर जो है सिटीज़न अगर मॉरिशस में जॉब कर रहा है, तो एग्जांपल से समझते हैं, तो ऑफ कोर्स उसको 2 बार टैक्स ना देना पड़े। अगर उसने एक बार वहाँ पर इनकम टैक्स पे कर दिया है, तो जब वो इंडिया में अपनी इनकम ट्रांसफ़र करेगा तो उस पर उसको टैक्स ना देना पड़े, ठीक है। तो जो है एग्जाम्पशन देता है ये टैक्स पर इनकम में रेजिडेंट को, जो कि उस दूसरे कंट्री में जो है अर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो है जो टैक्स पेयर्स के लिए टैक्स रेट्स भी होते हैं उनको भी लो रखा जाता है, ताकि ज़्यादा उनको टैक्स ना पे करना पड़े, इंटरेस्ट डिविडेंड या रॉयल्टीज़ जो इंडिया में वो अर्न करेंगे। जो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स होती हैं वो स्पेसिफिक रूल्स बनाती हैं इंटरनेशनल इनकम जो कि रेजिडेंट्स की होती है कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स की। इसमें एंटी अब्यूज़ प्रोविजंस भी डाले जाते हैं,
ताकि कोई और कंट्री का सिटीज़न या फिर कोई इन्वेस्टर जो है वो इसका बेनिफिट ना ले सके। ठीक है, तो फाइनेंशियल इवेजन को बचाने के लिए इसमें टाइम टू टाइम अमेंडमेंट भी की जाती है। तो सिग्निफिकेंस देखें अगर हम इंडिया और मॉरिशस के बीच के जो DAA है, तो जो उसी की वजह से जो है इंडिया में जो FPI है वो मेजरली मॉरिशस के रूट के थ्रू ही आती है। मॉरिशस फोर्थ लार्जेस्ट सोर्स बन चुका है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का इंडिया में, आफ्टर US, सिंगापुर और लग्जमबर्ग। FPI जो मॉरिशस से आई वो लगभग 4.19 लाख करोड़ थी, जो है अभी लास्ट ईयर जो एंड हुआ है मार्च 2024 में। तो अमेंडमेंट्स क्या की गई हैं अभी जो रिसेंटली, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है कि अभी तक रेटिफाई या नोटिफाई हमने नहीं किया है। तो इसमें प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट डाला गया है रेटिफिकेशन में या अमेंडमेंट में। तो अमेंडमेंट में क्या कहा गया है कि अगर कोई पर्सन सिर्फ इस ट्रीटी का बेनिफिट लेने के लिए जो है इन्वेस्टमेंट करता है या फिर ट्राई करता है, तो उसको इस ट्रीटी के जो है बेनिफिट्स नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि वो बेस इरोजन प्रॉफिट जो है शिफ्टिंग के अगर प्रोविजंस को वायलेट करता है। मतलब कंपनीज क्या करती हैं कि जानबूझकर जो है, जैसे कोई एक मेजर कंपनी जानबूझकर ऐसी कंट्री में जैसे मॉरिशस कंट्री में जाकर अपना हेडक्वार्टर खोल देंगी कि इंडिया से जो उन्होंने इनकम जनरेट करी, समझ लो एग्जांपल लेते हैं, फ्लिपकार्ट जो है वो जाकर मॉरिशस में उन्होंने अपने आप को रजिस्टर कर लिया, और इंडिया से जितना भी वो इनकम लेते हैं जाकर वो वहाँ पर इनकम जो है मॉरिशस में अपना हेडक्वार्टर बनाकर वहाँ पर वो इनकम वहाँ की दिखा देते हैं, और वहाँ पर जो है लो टैक्स जो है वो कटवा लेते हैं। और क्योंकि इंडिया और मॉरिशस के बीच में DDAA है, तो उनको इंडिया में वो कह देते हैं कि हमने तो मॉरिशस में इनकम टैक्स कटवा दिया है, वहाँ इंडिया में नहीं कटवाएंगे। तो ऑफ कोर्स फिर वो इंडिया के जो हाई टैक्स से बच जाते हैं। तो इसका तो मोटिव ही यही है ना कि आप बेस इरोजन या प्रॉफिट शिफ्टिंग कर रहे हो जानबूझकर अपनी, ताकि आप टैक्स की ट्रीटी का बेनिफिट ले सको। तो उस केस में जो है प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट जो है वो अप्लाई होगा और जो है उनको बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो मॉरिशस एक प्रेफर्ड जुरिस्डिक्शन बन चुका है इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स आने का। तो लास्ट टाइम भी जो है कैपिटल गेंस टैक्स के ऊपर जो है अमेंडमेंट की गई थी, जो DDAA में प्रोविजंस थे। अब इस बार जो है ये प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट जो है वो लाया गया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव। एनवायरनमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो कार्बन ऑफसेटिंग जो है स्कोप 3 एमिशंस और बिजनेसेस के जो है परमिट करने के लिए SBTI साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव बेस्ड क्लाइमेट टारगेट जो हैं उनसे रिलेटेड कुछ कंट्रोवर्सीज और स्केप्टिसिज्म आ रहा है। तो ये साइंस बेस्ड टारगेट्स इनिशिएटिव 2015 में ग्लोबल इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था कंपनीज़ को एनकरेज और सपोर्ट करने के लिए कि वो साइंस बेस्ड टारगेट्स रखें कि वो कैसे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करेंगी, ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से कम पर कैसे लेकर जाएंगी अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। तो बेसिकली SBTI एक पार्टनरशिप है बिटवीन CDP, यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कम्पैक्ट, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो इसमें टारगेट सेट किए जाते हैं जो कि वार्मिंग को लिमिट करते हैं 1.5 डिग्री सेल्सियस, जो गोल है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का। कंपनीज़ जो है वो इंडिपेंडेंटली अपने टारगेट्स को वेरीफाई और अप्रूव भी करवा सकती हैं। तो इसमें कमिटमेंट है बेसिकली कंपनीज़ की कि वो क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करेंगी, अपने कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करेंगी। SBTI ओवरसी करता है SBTI नेट ज़ीरो स्टैंडर्ड को भी, जो बेसिकली एक फ्रेमवर्क है कॉरपोरेट्स के लिए नेट ज़ीरो टारगेट एस्टेब्लिशमेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कुचिपुड़ी। ये टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली हाईलाइट किया गया है कि कुचिपुड़ी जो आर्टिस्ट हैं वो अभी सर्वाइवल के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो कुचिपुड़ी इंडियन क्लासिकल डांस है जो कि आंध्र प्रदेश को बिलोंग करता है। तो एक ग्रुप द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है। एक्टर्स को हम भागवतालू कहते हैं। 15th सेंचुरी के जो ग्रेट पोएट और म्यूजिशियन थे सिद्धेंद्र योगी जी, उन्होंने जो है इसकी डेवलपमेंट की कुचिपुड़ी की। और कुचिपुड़ी बेसिकली एक प्योर डांस है, इसमें एक्सप्रेसिव डांस होता है और स्टोरी टेलिंग होती है थ्रू डांस। कई बार इसको एक एज ऑफ द ब्रास प्लेट के ऊपर भी जो है परफॉर्म किया जाता है कर्नाटिक म्यूज़िक की बीट्स पर। और हिंदू गॉड कृष्ण के ऊपर जो है ये वैष्णव ट्रेडिशन के ऊपर ये बेस्ड डांस है, भगवत मेला से क्लोजली रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डॉक्सिंग। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्सिंग इंसिडेंट्स जो है वो रिसेंटली इंटरनेट पर इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो डॉक्सिंग का मतलब क्या होता है? तो ड्रॉपिंग डॉक्स, इसको हम मतलब इसका जो पूरा एक्सप्लेनेशन है वो है ड्रॉपिंग डॉक्स।
तो ये एक ऑनलाइन हरासमेंट का फॉर्म है जिसमें कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपके कंसेंट के बिना पब्लिश कर दी जाती है, आपको इंटिमिडेट करने के लिए, एक्सपोज करने के लिए, थ्रेटन करने के लिए। तो इसको कैसे रोका जा सकता है? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स रखो, अपनी बहुत ज़्यादा इमेजेस अपने नेबरहुड की ना दिखाओ लोगों को, ताकि आपकी लोकेशन रिवील ना हो सके, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, पेस सैटेलाइट साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नासा ने जो है पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया है साइंस क्वालिटी डेटा अपनी न्यू अर्थ ऑब्जर्विंग पेस सैटेलाइट से। पेस का मतलब क्या है? प्लैंकटन एरोसोल क्लाउड ओशन इकोसिस्टम सैटेलाइट, जो कि सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में प्लेस्ड है। इसमें जो प्राइमरी साइंस इंस्ट्रूमेंट लगा है वो है ओशन कलर इंस्ट्रूमेंट, और ये मेजर करता है ओशन के कलर को अक्रॉस अ स्पेक्ट्रम फ्रॉम अल्ट्रावायलेट टू शॉर्ट वेव इंफ्रारेड। इसमें 2 पोलैरीमीटर्स हैं, स्पेक्ट्रो पोलैरीमीटर फॉर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन और हाइपर एंगुलर रिसर्च पोलैरीमीटर। ओसीआई जो है ऑब्जर्व करता है ओशन, लैंड और एटमॉस्फेयर को अक्रॉस अ स्पेक्ट्रम ऑफ अल्ट्रावायलेट, विजिबल और नियर इंफ्रारेड लाइट। तो जो ये डेटा है रिसर्चर्स को अलाउ करता है कि वो माइक्रोस्कोपिक लाइफ को जो है स्टडी कर सके। जो है पेस के थ्रू जो है साइंटिस्ट इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि कैसे ओशन और एटमॉस्फेयर इंटरेक्ट करता है विद ईच अदर। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच। ये टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने 2.33 मिलियन हेक्टेयर्स जो है ट्री कवर सिंस 2000 जो है वो लूज़ किया है ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट के डेटा के हिसाब से। तो ये ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच क्या है? एक ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन है, ग्लोबल फॉरेस्ट को जो है मॉनिटर करती है नियर रियल टाइम बेसिस यूजिंग सैटेलाइट डेटा और अदर सोर्सेज। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ने इसको जो है बनाया है, या उनका प्रोजेक्ट है ये। और कोई भी जो है पर्सन इससे कस्टम मैप्स या फॉरेस्ट ट्रेंड्स को एनालाइज कर सकता है। तो अगर हम हाइलाइट्स देखें इसमें, तो कहा गया है कि जो प्राइमरी फॉरेस्ट है वो उसका जो लॉस है वो कम हुआ है 2022 के कंपैरिजन में 2023 में। वर्ल्ड लास्ट ईयर लगभग 37,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है ट्रॉपिकल प्राइमरी फॉरेस्ट जो है वो लूज़ कर चुका है। डिफॉरेस्टेशन ग्लोबली राइज हुई है 3.2% इन 2023। इंडिया ने 2.33 मिलियन हेक्टेयर्स जो है ट्री कवर सिंस 2000 जो है वो लूज़ किया है, और इंडिया में सबसे ज़्यादा असम में ये मैक्सिमम ट्री कवर लॉस देखा गया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, फोर्ट इमैनुअल। ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हिस्ट्री बफ्स जो है वो कह रहे हैं कि जो लेटराइट ब्रिक रेमनेंट्स हैं जो फोर्ट इमैनुअल के, उसको कंजर्व किया जाना चाहिए, जो कि पोर्चुगीज़ ने बनाया था 1503 में कोची केरला में। तो ये एक रूइंड फोर्ट है, फोर्ट कोची बीच, और इसको ओरिजिनली बिल्ड किया गया था 1503 में और रीइंफोर्स किया गया था 1538 में। एक सिंबल है ये स्ट्रेटजिक अलायंस का, जो महाराजा ऑफ कोची और मोनार्क ऑफ पोर्चुगल के बीच में हुआ था उस समय पर। इस फोर्ट ने पोर्चुगीज़ ऑक्यूपेशन इस एरिया को में स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत हेल्प किया था। फोर्ट को जो है कोची पोर्चुगीज़ पोजेशन तक रहा 1683 में। उसके बाद ये डच के पास ट्रांसफ़र हुआ, डच के बाद ब्रिटिश के पास आया, लेकिन जब से देश आज़ाद हुआ है तब से ऑफकोर्स इंडिया के पास ही रहा है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। ये टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो है उन्होंने वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया है गुजरात के खावड़ा रीजन में। तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, इसमें 45 गीगावाट की कैपेसिटी प्रोड्यूस करने की पावर है सोलर एनर्जी से प्रोडोमिनेटली, और ये सेकंड बेस्ट सोलर रेडिएशन का रीजन है कंट्री में आफ्टर लद्दाख। और इधर की जो विंड स्पीड्स हैं वो 5 टाइम्स दैट ऑफ द प्लेन्स है, और ये एक बफर जोन भी बनाता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए। इंटरनेशनल बॉर्डर पर है क्योंकि ये इंडिया और पाकिस्तान के, ठीक है। और इसकी अगर हम साइज़ देखें, जो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट बनाया गया है वो लगभग 5 टाइम्स द साइज़ ऑफ पेरिस है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ईरान ने रिसेंटली अटैक किया था इसराइल पर, तो ईरान को हेल्प करने के लिए एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जो ईरान कहता है उन्होंने भी हेल्प किया। तो उसमें कौन कौन आता है ईरान के अलावा? हमास, पैलेस्टीन इस्लामिक जिहाद, हिजबुल्लाह, हुथीज़, सीरिया, शाइट ग्रुप्स ऑफ इराक। अब ये सब जो हैं ये ओवर द डेकेड्स ईरान ने कल्टीवेट किए हैं ये सब ग्रुप्स, ताकि यूएस को काउंटर कर सके और इसराइल को काउंटर कर सके इस रीजन में, सिंस जब से इसराइल बना है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is new army division. This topic is important for your security section.
So a plan has been waiting for a long time to create a new army division for possible deployment of troops to eastern Ladakh, and it might see the reality this year. So this is part of some changes which are being made for Jammu and Kashmir region and the Ladakh area. So this is significant because India is commemorating the 40th year of Operation Meghdoot also. So the new army division is being created, uh, and it may be called as 72 division for possible deployment in eastern Ladakh under the Northern Command. So a division has approximately 14,000 to 15,000 troops. So currently army has 4 strike corps: Mathura based 1 corps, Ambala based 2 corps, Bhopal based 21 corps, and 17 MSC in Panagarh. So however, till 2021, only 17 MSC was focused on China. The other 3 were focused on Pakistan. But in the backdrop of military standoff with China, which began in 2020, a restructuring was carried out in 2021 to keep 2 of the strike corps for the mountains facing China. So the 1 corps and 17 corps were restructured to focus on the northern and eastern borders. So the role of 1 corps was reoriented towards northern borders with China. The 17 corps was given an additional division to focus on the eastern theatre. So the decision is a part of overall deployment changes being planned in the Northern Command with a two-pronged strategy which will be focusing on eastern Ladakh amid the standoff along the LAC with China, and on ensuring that no gap will be there in training of strike corps elements. So what is the situation around LAC after Galwan incident? So India and China have been pushing each other in with almost say 50,000 to 60,000 troops each along the line of actual control since the deadly clashes of Galwan Valley of 2020. So the friction points like Galwan Valley, Pangong So, Gogra Hot Springs have seen some resolution in the last 3 years with the creation of buffer zones, but the problem remains unsolved in Debsang Plains and Damchok area. So what is Operation Meghdoot? So it was the code name for a military operation which was carried out by Indian Armed Forces in 1984. So the objective of this operation was to secure control of the strategically important Siachen Glacier in the eastern Karakoram range of Himalayas. So this operation involved Indian troops who were airlifted to key positions across along the glacier, and they established military posts to prevent Pakistan from gaining control over this area. So India has been maintaining military presence in this Siachen Glacier region since that time. So, what is Siachen Glacier? It is a glacier located in the eastern Karakoram range of Himalayas, just northeast of point NJ9842, where the line of control between India and Pakistan ends. So, the glacier lies between Saltoro Ridge, immediately to the west, and the main Karakoram range to the east. The entire Siachen Glacier, with all major passes, is currently under the administration of India since 1984. The glacier's melting waters are the main source of the Nubra River in the Indian region of Ladakh, which drains into the Shyok River. At 76 km long, it is the longest glacier in the Karakoram and second longest in the world's non-polar areas. So the next topic is India Mauritius DTAA. This topic is important for your economy section. So income tax department has said that the amended India Mauritius protocol on the double taxation avoidance agreement is awaiting ratification and notification by the department. So DTAA between India and Mauritius was signed in 1983, and a unanimous decision was made regarding the avoidance of double taxation called the DTAA. So how this double taxation avoidance agreement operates? So let's understand it through how it is misused actually. Okay, so like I was giving an example earlier that Flipkart, uh, which operates mainly in India, earns its income through India. What they do is they get registered themselves in uh, Mauritius. So they get registered there, they operate their headquarter there with minimal staff, and whatever income they generate from India, they transfer it to Mauritius and their headquarter, and they pay the tax there only. Okay, because Mauritius is a low tax jurisdiction, so they charge a minimal tax. And due to this double taxation avoidance agreement, when India tries to put tax on Flipkart, they what they would say is that uh,
we have already paid tax to Mauritius, and because we have double taxation avoidance agreement, you cannot tax us once again. Okay, because no double tax can be levied. So actually, double taxation avoidance agreement is meant to offer relief by exemption of tax on income in the resident country that residents earn in another nation. So lowering the uh, rate tax rate for taxpayers, so they have to pay lower TDS on incomes like interest, dividends, and royalties in India was the major aim of this DTAA. But of course, it has been abused by the investors. So contracting states also follow specific rules, and there is also anti-abuse provision so that the benefits of this agreement do not is not availed by the residents or the citizens of other countries. Okay, so DTAA was the major reason for a large number of foreign portfolio investors and foreign entities who are routing their investments in India through Mauritius. So to avoid payment of taxes to in India, what they do is they route it through Mauritius and they pay the lowest amount of tax there, and then while coming into India through for investment, they say that they have already paid tax in Mauritius, so they do not need to pay it in India because of the double TA, DTAA. So Mauritius, that's why, has remained the fourth largest source of foreign portfolio investments in India after US, Singapore, and Luxembourg. So FPI investment from Mauritius stood at about 4.19 lakh crore at the end of March 2024. So what has happened now is that in March 2024, India and Mauritius has signed an amendment to this DTAA, whereby the principal purpose test has been introduced so as to curtail this tax avoidance uh, clauses. So the actual intent of the transaction would be looked at while giving the benefit of DTAA to the particular investor, so as to see that the actual intent was not to avoid tax, and it was meant as a ordinary transaction between the investor or the beneficiary. So uh, any Indian bound or outbound cross-border structuring of investment routed through Mauritius should also factor in the base erosion and profit sharing shifting provisions, that any multilateral company is not using this DTAA to shift their profits into Mauritius and erode the base so as to avoid paying tax in India. Okay, so Mauritius has been a preferred jurisdiction for investments in India, like we have seen earlier. So this treaty was last amended in 2016 to allow the right to tax capital gains also. Okay. So the next topic is science-based target initiative. This topic is important for your environment section. So recently, permitting carbon offsetting for scope 3 emissions for businesses with SBTI based climate targets has stirred controversy and skepticism. So what is science-based targets initiative? It's a global initiative established in 2015 which aims to encourage and support companies to set science-based targets to reduce greenhouse gas emissions and limit global warming to well below 2 degrees Celsius above pre-industrial levels. So it's a partnership between CDP, United Nations Global Compact, the World Resources Institute, and the Worldwide Fund for Nature. So it involves setting targets which are consistent with limiting warming to 1.5 degrees Celsius, which is the uh, goal of Paris Agreement also. So companies can have their targets independently verified and approved by the SBTI also. By setting the science-based targets, companies can also demonstrate their commitment to addressing climate change and reducing their carbon footprint. So SBTI distinguishes between near and long-term goals and commitments. SBTI also oversees the SBTI Net Zero Standard, which is a pioneering framework for corporate net zero target establishment. So the next topic is Kuchipudi. This topic is important for your art and culture section. So recently it is highlighted that Kuchipudi artists are struggling for survival and going through a tough phase due to lack of patronage. So Kuchipudi is one of the Indian classical dance which belongs to Andhra Pradesh. It was originally performed by a group of itinerant actors known as Bhagavat Thalu. So in 15th century, the great poet and musician Siddhendra Yogi played a major role in the development of Kuchipudi. So this dance incorporates both pure dance and expressive dance, as well as elements of storytelling through dance.
So it is also performed on the edge of a brass plate on the beats of Carnatic music. It is largely developed as a Hindu god Krishna oriented Vaishnavism tradition, and it is most closely related to Bhagavad Mela. Okay. So the next topic is doxing. This topic is important for your security section. So in recent times, doxing incidents are increasing over internet across the globe. So doxing is derived from dropping dox, which is a form of online harassment involving the publication of personal information about an individual without their consent. So it is often carried out to expose, threaten, or intimidate someone, to which can lead to, of course, severe consequences. So how to prevent it? Use strong passwords and avoid posting your photographs which reveal your neighborhood. Okay. So the next topic is space satellite. This topic is important for your science and tech section. So NASA is publicly distributing science quality data from its newest Earth observing PACE satellite. So PACE satellite stands for Plankton Aerosol Cloud Ocean Ecosystem Satellite, which is placed in Sun synchronous orbit. The primary science instrument for PACE is the Ocean Color Instrument, which is designed to measure the ocean's color across a spectrum from ultraviolet to shortwave infrared. So it also features two polarimeters. OCI observes the uh, ocean, land, and atmosphere across a spectrum of ultraviolet, visible, and near infrared light. The data also allows researchers to study microscopic life in the ocean and particles in the air. With PACE, scientists can also investigate how the ocean and atmosphere interact with each other. Okay. So the next topic is Global Forest Watch. This topic is important for your environment section. So India has lost 2.33 million hectares of tree cover since 2000, which has been said by the which has been which has been revealed by the latest data from the Global Forest Watch Monitoring Project. And this Global Forest Watch is an open source web application to monitor global forests in near real time using satellite data and other sources. So it is a project of Washington based non-for-profit organization called the World Resources Institute. So it is free and simple to use, enabling anyone to create custom maps, analyze forest trends, subscribe to alerts, or download data. So what are the highlights of this report? So the loss of primary forests uh, declined 9% last year compared to 2022 at the global level. The world last year saw about 37,000 square kilometers of tropical primary forest loss. The deforestation globally rose by 3.2% in 2023, and India has lost 2.33 million hectares of tree cover since 2000. Okay. Assam has had the uh, maximum tree cover loss at 3,24,000 hectares. So the next topic is Fort Emmanuel. This topic is important for your art and culture section. So history buffs are seeking steps to conserve the laterite brick remnants of Fort Emmanuel that was built along the beachfront by the Portuguese in 1503. So Fort Emmanuel is a ruined fort located at the Fort Kochi beach in Kochi, Kerala. It was originally built in 1503 and reinforced in 1538. So it was a symbol of the strategic alliance between Maharaja of Kochi and Monarch of Portugal, after whom it was named. So it is a it was a massive structure and the entire township was within its confines. It has greatly helped in strengthening the Portuguese occupation of that area. Fort Kochi remained in Portuguese possession until 1683, after which it got transferred to Dutch and later to the British, and the foreign control of Fort Kochi ended in 1947. So the next topic is Khavda Renewable Energy Park. This topic is important for your environment section. So Adani Green Energy Limited has recently established the world's largest renewable energy park in Gujarat's Khavda region with impressive 45 gigawatt capacity, predominantly fueled by solar energy. So this region has the second best solar radiation in the country after Ladakh and wind speeds which is 5 times that of the plains. So it is situated just 1 kilometer from the international border with Pakistan. The energy park also maintains a buffer zone manned by the Border Security Force, and it spans 538 square kilometers, approximately 5 times the size of Paris. Okay. So the next topic is axis of resistance. This topic is important for your international relations. So Iran has recently launched an attack on Israel along with the help of its axis of resistance front. So it is a group which has been built over decades by Iranian support to resist Israel and US influence in the Middle East. It consists of Hamas, Palestine Islamic Jihad, Hezbollah, Houthis, Syria,
Shiite groups of or Iraq, and Iran has long been critical of Israel's creation in 1948 and seeing it as a means of US to influence the region for its strategic interests. So that's why they have been at odds with Israel and US both. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.